Hello students, how are you all? You all must be enjoying these holidays at home. I know it's very difficult to be at home. Okay, now in my previous video I shared how to write a notice properly with the format, and I hope so when you will watch my videos then the process of writing this notice will be absolutely clear to you. In case still you have any doubts, as I told you, you can write your views in the comments. If you want me to again in a better manner, then I'm ready for that. Now today's my video is mainly based on your invitation writing. You will be having one question on invitation. Invitation दो तरह का होता है, एक होता है formal और एक होता है informal. I will let you know the difference between the formal invitation as well as the informal invitation. What comes in the formal means, suppose at your home you have your sister's marriage, brother's marriage, and your parents ask you, okay, you design the format. At least you should know how to write a formal invitation. When we are writing an invitation for the large gathering, it becomes your formal. It is a formal invitation. When you are having a small get together, कोई घर में छोटी सी पार्टी रखनी है, कोई आपने रिलेटिव्स को या फिर अपने फ्रेंड्स को देना है खाली, मतलब देयर वॉन्ट बी एनी फॉर्मल गेस्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल इन्विटेशन. तो आज के वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द फॉर्मेट फॉर राइटिंग formal invitation. Here is the format of writing a formal invitation. You can see just on the board. As in my previous video, I told you, first of all, you need to write which question you are attempting. Notice, formal invitation, informal, or advertisement. But now suppose here I am going to attempt formal invitation. I have written at the top formal invitation. Then your first point is that you have to write again within a box. Box is very important, and the word limit for that is only 50 words. Again you have to write in 50 words, and it will be of 3 marks. Again, one for the format, one for the content, and one for the expression. Now see the sequence. How do we write formal invitation? The most important thing is that you have to leave the margin half inch from this side, half inch from this side, and half inch from above, and half inch from the down. Means you have to write this formal invitation in the center of the box. That is very important. It will enhance the presentation. Now the most important thing is, first of all, write down sender's name, one who is writing the invitation, and the name will definitely be given the question. In case if any name is not given, you can write imaginative name, Mrs. and Mr. XYZ. Means first of all, today I will share only the format. First of all, what will come here? Sender's name. Then in the next line, each information should be given a separate line. That is very important. And the second most important thing is, it is always written in third person. इसको हम कभी भी I में और you में नहीं लिखेंगे, इसको हम he, she, it, they में लिखेंगे. हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि formal invitation is always, हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल what will come here? Sender's name. Then second thing comes standard expression. ये आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये होता क्या है standard expression? आपने कार्ड्स में कभी देखा कि वहां क्या लिखा होता है? Solicit your benign presence, request the pleasure of your company. उसको हम क्या बोलते हैं? Standard expressions. And they are very important to write. फिर next line में हम क्या लिखेंगे? Purpose. कि क्या है? शादी का कार्ड है, मुंडन सेरेमनी है, सिल्वर जुबली है, गोल्डन जुबली है आपके पेरेंट्स की, एनीथिंग, एनी सेलिब्रेशन एट होम एट अ लार्ज स्केल. जहां मैंने बोला था फॉर्मल गेस्ट आएंगे, जहां पे फॉर्मल गैदरिंग विल बी देयर वी राइट फॉर्मल इन्विटेशन. जहां कार्ड छपते हैं आपके, बट नाउ डेज ड्यू टू पैंडेमिक वी हैव नॉट सीन एनी कार्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर, बट नाउ ऑनलाइन कार्ड्स, वी पीपल सेंड ऑनलाइन कार्ड्स. तो दिस इज व्हाट इज द फॉर्मेट इज टू बी फॉलोड. सेंडर्स नेम, standard expressions, then in the next line write purpose. Suppose if it is of marriage, so what you will write? We request Mrs. X and Mr. Y request the pleasure of your company on the occasion of, purpose क्या है? Marriage. A weds B. Then next comes, give a separate line to each. Date, again like a notice, again 5 things: purpose, date, day, time, and venue. Similarly, we have to take care how do we write an invitation. If all these entries are there, you are eligible for 3 on 3 marks
in the exam. Purpose. What is the purpose? Marriage. On which date? You have to mention the date. That is on Monday. Don't forget. जब हमारे घर में कार्ड आता है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? अच्छा सैटरडे है, अच्छा संडे है, हाँ फिर मैं चलूंगी, चलो मैं फिर चलूंगा मैं. तो वहां पे क्या आएगा? पर्पस, डेट, फिर उसके बाद डे. अच्छा कितने बजे हमें भी पूछते हैं, अच्छा रात को 8 बजे है या 8:30 बजे है. तो मीन्स टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन वेन्यू कहाँ पे है, दैट मैटर्स. और हम बच्चे क्या देखते हैं सबसे पहले? अच्छा वो 3 स्टार में है तो मैं जाऊंगा. अच्छा वो छोटे मोटे होटल में है, मम्मी मैं नहीं जाऊंगी या मैं नहीं जाऊंगा, आप चले जाना. तो मीन्स वेन्यू इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू राइट RSVP. Once again, I repeat it. RSVP means reply soon if you please. बट हमारे यहाँ रिवाज नहीं है. कार्ड आता है तो जाते हैं तो भी ठीक है, नहीं जाते हैं. बट एक जो हमारे एथिक्स, जो हमारे मॉरल वैल्यूज कहते हैं कि जब किसी के यहाँ से हमें इन्विटेशन आता है, अगर हम किसी वजह से नहीं जा पाते हैं तो एटलीस्ट हमें उनको रिप्लाई करना चाहिए. दैट इज वाई इन योर सिलेबस यू हैव एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूजल ऑफ द इन्विटेशन. जैसे आपको इन्विटेशन मिलता है उसका हमें एक्सेप्टेंस भी लिखना पड़ता है, उसका हमें रिफ्यूजल भी देना चाहिए. तो यहाँ पे आ जाएगा RSVP मीन्स ऑल फैमिली मेंबर्स. ऑल RSVP या मित्तल फैमिली या Sharma's family you can write, या leave it as it is only. In the exam, RSVP means reply soon if you please. Here can be any telephone number, yeah, any name post, anything can be written here. And the last one is with best compliments from all nears and dear ones. Don't forget to write this format. RSVP at the last on the left hand side and with best compliments from on the right hand side means all nears and dears one. This is what is the format that you need to follow for writing up the formal invitation. Now again I repeat it. First of all, what is to be written? That is your sender's name. Then second comes standard expressions. What comes in standard expressions? Request the pleasure of your company, solicit your benign presence. मैं आपको बाद में और भी बताऊंगी इसमें और क्या क्या आ सकता है. फिर उसके बाद पर्पस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग. जैसे मैंने आपको नोटिस में कहा था 5 चीजें चाहिए होती हैं, ऐसे ही इन्विटेशन में ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा पर्पस क्या है इसको लिखने का. कोई शादी है घर में, या किसी का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन है, या किसी की मुंडन सेरेमनी है, या किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, एनी रीजन कैन बी देयर. देन डेट, then comes day, then time and venue. This is what is the formal invitation. But the most important thing is the whole invitation will be written in a single sentence. वो कैसे लिखा जाएगा? I will give you one example. Mrs. and Mr. XYZ solicit your benign presence on the occasion of the marriage of A weds B on, that is on, at 8 p.m. at so and so palace. Single sentence. In a third person we have written, again I repeat it, it is always written in a single sentence and in a third person. How we are able to write? Mrs. and Mr. XYZ request the pleasure of your company on the occasion of marriage of their son's marriage. R नहीं आएगा, OUR, there in the third person, of their son's marriage. A weds B. मैं आपको लिख के दिखाऊंगी वो कैसे लिखा जाएगा in a presentable manner. Today only in this video I am sharing the format, how which format is to be followed. Then किस डेट को? On this date, that is on Monday at 8 p.m. at XYZ hall. This is what, see how I have in a very easily manner, in a very easy manner I just shared. In a single sentence we can write this formal invitation. And at last don't forget to write again, I say RSVP and with best compliments from. ठीक है बेटा, thank you. In this I shared only the format and follow this format. In my next video I will take the examples how to write formal invitation with refusal and acceptance. Thank you beta, have a nice day.